निर्णय धारा 138 एनआईए के तहत 3 सितंबर 2025 ज्ञानचंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह और अन्य। एक बार जब शिकायतकर्ता ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया और डिफॉल्ट राशि का पूर्ण और अंतिम निपटान स्वीकार कर लिया तो धारा 138 एनआईए अधिनियम के तहत कार्यवाही टिक नहीं सकती। इसलिए निचली अदालतों द्वारा दी गई समवर्ती सजा को रद्द करना होगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता। स्रोत सर्वोच्च न्यायालय। खबरों में क्यों? हाल ही में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत सजा को तब तक बरकरार नहीं रखा जा सकता जब तक शिकायतकर्ता पूर्ण निपटान स्वीकार करते हुए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता। और उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अभियुक्त के संशोधन आवेदन को खारिज किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय ज्ञानचंद बनाम हरपाल सिंह और अन्य 2025 मामले में दिया। ज्ञानचंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह और अन्य 2025 का पृष्ठभूमि क्या थी? हरपाल सिंह ने ज्ञानचंद गर्ग के खिलाफ एनआई अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने 5 लाख रुपए की राशि उधार ली थी। उधार राशि के भुगतान के लिए अपीलकर्ता ने एक चेक प्रदर्शनी C1 जारी किया जो प्रस्तुति पर अपर्याप्त धनराशि प्रदर्शनी C2 के कारण वापस कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने वैधानिक प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता को कानूनी नोटिस प्रदर्शनी C4 जारी किया। शिकायत क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। परीक्षण के बाद अपीलकर्ता को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट JMFC द्वारा आपराधिक मामले संख्या 90 ऑफ 2009 में 21/4/2010 के आदेश के तहत दोषी ठहराया गया। अपीलकर्ता को 6 महीने के साधारण कारावास को 1000 रुपीज के जुर्माने की सजा दी गई जिसमें डिफॉल्ट होने पर 15 दिन का साधारण कारावास था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक अपील संख्या 62 ऑफ 2010 में 14/9/2010 के आदेश के तहत सजा को बरकरार रखा। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 2563 ऑफ 2010 में 27/3/2025 के आदेश के तहत पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद दोनों पक्षों ने 6 अप्रैल 2025 को समझौता निपटान समझौते में प्रवेश किया। इस निपटान के तहत शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के बरी होने की मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। समझौता निम्नलिखित के आधार पर हुआ। 2 डिमांड ड्राफ्ट संख्या 004348 दिनांक 4 अप्रैल 2025 और 004303 दिनांक 11/2/2025 प्रत्येक 2.5 लाख रुपए के। 3 चेक संख्या 354412 दिनांक 10 मई 2025, 354413 दिनांक 10/6/2025 और 354414 दिनांक 10/7/2025 प्रत्येक 1 लाख रुपए के। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के 27 मार्च 2025 के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन CRM नंबर 15127 ऑफ 2025 दायर किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल 2025 को इस आवेदन को गैर स्थायी होने के आधार पर खारिज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 8050 ऑफ 2025 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध मुख्य रूप से एक नागरिक गलती है जिसे परक्राम्य लिखतों की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए आपराधिक परिणामों के साथ जोड़ा गया है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि 2002 के संशोधन द्वारा डाली गई धारा 147 एनआई अधिनियम विशेष रूप से धारा 138 के तहत अपराध को समझौता योग्य बनाती है, जिससे पक्षकार कार्यवाही के किसी भी चरण में विवाद का निपटारा कर सकते हैं। न्यायालय ने धारा 138 के अपराधों को नागरिक भेड़ में आपराधिक भेड़िया की खाल के रूप में चित्रित किया, ये संकेत देते हुए कि यद्यपि इस प्रावधान में आपराधिक प्रतिबंध है, अंतर्निहित विवाद मूल रूप से निजी नागरिक प्रकृति के है। न्यायालय ने देखा कि जब पक्ष स्वेच्छा से समझौतों में प्रवेश करते हैं तो वे जोखिमों और लाभों को समझते हुए खुले दिमाग से ऐसा करते हैं। ऐसे निपटान मूल शिकायत को समाहित करते हैं और मूल और बाद की शिकायतों दोनों को आगे बढ़ाकर इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने उल्लेख किया है कि
जब पक्ष समझौतों में प्रवेश करते हैं और मुकदमेबाजी प्रक्रिया से बचने के लिए अपराध को समझौता करते हैं तो अदालतें ऐसे समझौते को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। पक्षों के स्वैच्छिक निर्णय के खिलाफ अपनी इच्छा थोप नहीं सकती। न्यायालय ने कहा है कि एक बार जब शिकायतकर्ता विवादित राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान को स्वीकार करते हुए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर लेता है तो धारा 138 NI अधिनियम के तहत कार्यवाही टिक नहीं सकती और समवर्ती सजाओं को रद्द करना होगा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विधायिका ने धारा 147 NI अधिनियम के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के बावजूद ऐसे अपराधों के समझौतों की स्पष्ट अनुमति दी है, खासकर जब पक्ष स्वेच्छा से समझौते पर पहुंचे हो। न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस मामले में समझौता बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से और शिकायतकर्ता की अपनी इच्छा से किया गया था, जिससे ये कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रभावी बन गया। NI अधिनियम की धारा 138 क्या है के बारे में। धारा 138 तब अपराध बनाती है जब कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते पर किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के लिए चेक जारी करता है और वो चेक अपर्याप्त धनराशि या सहमत ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक होने के कारण भुगतान नहीं होता, जिससे चेक जारी करने वाला आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाता है। चेक जारी करने वाले को 2 वर्ष तक की कारावास की सजा या चेक की राशि के दोगुने तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। चेक को उसके जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर या उसकी वैधता अवधि के भीतर जो भी पहले हो बैंक में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इस धारा के तहत कोई अपराध नहीं बनता। अपराध स्थापित होने के लिए प्राप्तकर्ता या उचित धारक को बैंक से चेक के अनादर की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले को लिखित नोटिस देकर भुगतान की मांग करनी होगी। चेक जारी करने वाले को मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। जो इस अवधि में भुगतान न करने पर ही धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। ये धारा केवल कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किए गए चेकों पर लागू होती है। ये सुनिश्चित करते हुए कि ये प्रावधान वास्तविक वाणिज्यिक लेन देन को कवर करता है, न कि मुफ्त भुगतानों को। मामले के कानून मेसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कंचन मेहता 2018। न्यायालय ने कहा कि NI अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध मुख्य रूप से एक नागरिक गलती है और 2002 के संशोधन द्वारा डाली गई धारा 147 के तहत विशेष रूप से समझौता योग्य बनाया गया है। इस कानून का उद्देश्य व्यावसायिक लेन देन को सुचारू रूप से संचालित करना है, क्योंकि चेक का अनादर प्राप्तकर्ता को अपूरणीय हानि पहुंचाता है और व्यावसायिक लेन देन की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। पी मोहनराज और अन्य बनाम मेसर शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 2021। न्यायालय ने धारा 138 NI अधिनियम के अपराध को नागरिक भेड़ में आपराधिक भेड़िया की खाल के रूप में चित्रित किया। इस प्रावधान के तहत पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दे निजी प्रकृति के होते हैं, जिन्हें परक्राम्य लिखितों की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए आपराधिक क्षेत्राधिकार के दायरे में लाया गया है। मेसर्स ग्लिम्सेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल 2021। जब पक्ष स्वेच्छा से समझौते में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मूल शिकायत और बाद की शिकायत दोनों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। निपटान समझौता मूल शिकायत को समाहित करता है और शिकायतकर्ता जोखिमों को समझते हुए खुले दिमाग से समझौते में प्रवेश करते हैं। बीवी सेशैया बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य 2023। जब पक्ष समझौते में प्रवेश करते हैं और अपराध को समझौता करते हैं तो वे मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा करते हैं। अदालतें ऐसे समझौते को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और पक्षों के स्वैच्छिक निर्णय के खिलाफ अपनी इच्छाएं थोप नहीं सकती जब कानून ऐसे समझौते की अनुमति देता है। कार्यवाही के स्थगन के दौरान पेंडेंट लाइट भरण पोषण 3 सितंबर 2025। अंकित सुमन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यवाही का केवल स्थगन करना कार्यवाही का समापन नहीं माना जाता और भरण पोषण का दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक कि आदेश को रद्द, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाता। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम, स्रोत इलाहाबाद उच्च न्यायालय। खबरों में क्यों।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने अंकित सुमन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025 मामले में पेंडेंट लाइट भरण पोषण के लिए वसूली वारंट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये कहते हुए कि स्थानांतरण याचिका के कारण वैवाहिक कार्यवाही के स्थगन से पति को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत भरण पोषण के दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती। अंकित सुमन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025 मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? पति याचिकाकर्ता ने 20 जुलाई 2018 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ पीलीभीत के परिवार न्यायालय में तलाक याचिका दायर की। पत्नी ने आरोपों का खंडन करते हुए लिखित बयान दायर किया और बाद में 26 मार्च 2019 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पेंडेंट लाइट भरण पोषण के लिए आवेदन दायर किया। परिवार न्यायालय ने शुरू में पत्नी के भरण पोषण आवेदन को 30 अक्टूबर 2020 को खारिज कर दिया, लेकिन इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह और नाबालिग बेटी को 10,000 रुपये के साथ साथ 30,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में प्रदान किए। पति ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 29 नवंबर 2022 को भरण पोषण राशि को संशोधित कर पत्नी के लिए 10,000 रुपये और नाबालिग बेटी के लिए 5,000 रुपये कर दिए। पत्नी ने 26 अगस्त 2024 तक 2,50,000 रुपये के भरण पोषण बकाया वसूली के लिए एक निष्पादन मामला दायर किया। इस बीच पत्नी ने तलाक मामले को पीलीभीत से बरेली में स्थानांतरित करने के लिए एक स्थानांतरण याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर 2023 को तलाक कार्यवाही पर स्थगन आदेश दिया। पति ने तर्क दिया कि चूंकि कार्यवाही स्थगित थी, इसलिए वो स्थगन की अवधि के लिए भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी? न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 का विश्लेषण किया, जो वैवाहिक कार्यवाही के दौरान पेंडेंट लाइट भरण पोषण और मुकदमेबाजी व्यय प्रदान करता है। न्यायमूर्ति निगम ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 24 का उद्देश्य वैवाहिक कार्यवाही में आर्थिक रूप से कमजोर पक्षों को तत्काल राहत प्रदान करना है, ताकि वे मुकदमेबाजी के दौरान असमर्थ न रहे। न्यायालय ने श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन 1992 का हवाला देते हुए रद्द करना और स्थगन के बीच अंतर किया, ये कहते हुए कि किसी आदेश का स्थगन उसका अस्तित्व पर्याप्त नहीं करता, बल्कि केवल उसके संचालन को निलंबित करता है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय का 29 नवंबर 2022 का भरण पोषण भुगतान का आदेश वैध रहा और इसे न तो वापस लिया गया और न ही रद्द किया गया। न्यायालय ने स्थापित किया कि स्थानांतर कार्यवाही स्वयं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही का गठन करती है। न्यायालय ने कई मिसालों का उल्लेख किया, जिसमें दिखाया गया कि धारा 24 के आवेदन पुनर्स्थापना आवेदनों, पुनरीक्षण कार्यवाहियों और अन्य सहायक कार्यवाहियों के दौरान भी लागू होते हैं। न्यायालय ने पति के तर्क को पूरी तरह से गलत माना और कहा कि कार्यवाही का केवल स्थगन करना समापन नहीं माना जाता, इसलिए भरण पोषण का दायित्व समाप्त नहीं होता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 क्या है के बारे में। धारा 24 HMA पेंडेंट लाइट भरण पोषण और मुकदमेबाजी व्यय प्रदान करता है। भरण पोषण एक मानव और कानूनी अधिकार दोनों है। ये धारा लंबित मुकदमेबाजी के दौरान पति पत्नी को अस्थायी भरण पोषण सुनिश्चित करता है। भरण पोषण का अर्थ पिता द्वारा बच्चों को या पति द्वारा पत्नी को आश्रितों के खर्चों और जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसे गुजारा भत्ता भी कहा जाता है, जो जीवन यापन के खर्चों को कवर करता है। हिंदू कानूनों के तहत भरण पोषण तब दिया जाता है चाहे पक्ष साथ रहे या तलाक हो गया हो। पेंडेंट लाइट का अर्थ है मुकदमे के लंबित रहने के दौरान या मामले की लंबित अवधि के दौरान। ये HMA के तहत कार्यवाही के दौरान आजीविका सहायता और आवश्यक खर्चों के लिए अंतरिम भरण पोषण को नियंत्रित करता है, जब स्वतंत्र आय अपर्याप्त या नहीं होती। पेंडेंट
लाइट भरण पोषण का अर्थ पक्षों के बीच मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पत्नी और बच्चों को जीवन यापन के खर्चों और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये प्रावधान लिंग तटस्थ अधिकार प्रदान करता है जिससे पति और पत्नी दोनों इस उपाय के लिए आवेदन कर सकते हैं। HMA की धारा 24 के प्रावधान, जब कोई पति पत्नी मुकदमेबाजी कार्यवाही के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं रखता तो अदालतें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के मुकदमेबाजी खर्चों और भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकती है, जिसमें प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखा जाता है। आवेदनों को नोटिस की तामील की तारीख से 60 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए। HMA की धारा 24 के मूल सिद्धांत। मुकदमेबाजी के खर्चे लंबित HMA कार्यवाही के दौरान खर्चों को कवर करता है, जिसमें वकील शुल्क, अदालत शुल्क, स्टाम्प शुल्क, यात्रा व्यय और संबंधित खर्चे शामिल है। ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर पति पत्नी बिना लागत के बोझ के कानूनी प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग ले सके। न्यायालय का विवेक, अदालतों के पास पेंडेंट लाइट भरण पोषण और खर्च प्रदान करने का विवेकाधीन अधिकार है। ये व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भरण पोषण राशि का उचित निर्धारण करने की अनुमति देता है। अदालतें दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और जरूरतों का आकलन करती है। अस्थायी प्रकृति, धारा 24 के तहत भरण पोषण अस्थायी है जो केवल लंबित कानूनी कार्यवाही के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अदालतों के पास मामले के अंत में अंतिम भरण पोषण तय करने का विवेक है। HMA की धारा 24 और CRPC की धारा 125 BSNS की धारा 144 के बीच अंतर। HMA की धारा 24 और CRPC की धारा 125 BNSS की धारा 144 के बीच अंतर। CRPC की धारा 125 BNSS की धारा 144। HMA की धारा 24 केवल हिंदुओं पर लागू, धर्म जाति विश्वासों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू, केवल तलाक याचिका की लंबित अवधि के दौरान, भरण पोषण तलाक के दौरान और बाद में भरण पोषण केवल पति पत्नी हकदार, पति पत्नी बच्चे वैध अवैध माता पिता पात्र, जीवन स्तर, आय, जरूरतों के आधार पर पुरस्कार, दावेदार की जरूरतों और प्रतिवादी की भुगतान क्षमता के आधार पर पुरस्कार। अविवाहित बेटी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। 3 सितंबर 2025 अनुराग पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त प्रधान सचिव गृह लखनऊ और अन्य। यदि कोई बेटी धारा 125 की CRPC के तहत आवेदन की लंबित अवधि के दौरान वयस्क हो जाती है तो परिवार न्यायालय उसी कार्यवाही में 1956 अधिनियम की धारा 20 सब क्लॉज 3 के प्रावधानों को लागू करके उसे भरण पोषण की अनुमति दे सकता है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार। स्रोत सर्वोच्च न्यायालय। खबरों में क्यों। हाल ही में न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ वयस्क अविवाहित बेटी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती और इसके बजाय हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 सब क्लॉज 3 के तहत आवेदन करना होगा। ये निर्णय परिवार न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए आया जिसमें वयस्क बेटी को धारा 125 CRPC के तहत भरण पोषण का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय अनुराग पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त प्रधान सचिव गृह लखनऊ और अन्य 2025 मामले में दिया। अनुराग पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त प्रधान सचिव गृह लखनऊ और अन्य 2025 की पृष्ठभूमि क्या थी। कुमारी नेहा पांडे, एक अविवाहित वयस्क बेटी, ने अपने पिता अनुराग पांडे से आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। आवेदन दायर करने के समय बेटी ने पहले ही वयस्कता प्राप्त कर ली थी, जिसका खुलासा स्वयं आवेदन में किया गया था। परिवार न्यायालय ने ये नोट करने के बावजूद कि वो आवेदन दायर करने के समय वयस्क थी, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 सब क्लॉज 3 पर भरोसा करते हुए पिता को 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया। पिता ने इस आदेश को आपराधिक पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी, ये तर्क देते हुए कि निचली अदालत में अभिलाषा बनाम प्रकाश 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या की थी। पिता ने तर्क दिया कि वयस्क बेटी धारा 125 CRPC के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है और ऐसी राहत केवल 1956 अधिनियम की धारा 20 सब क्लॉज 3 के तहत नागरिक मुकदमा दायर करके प्राप्त की जा सकती है। बेटी के वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि पिता द्वारा तर्कित
कानूनी स्थिति सही थी और सुझाव दिया कि मामले को परिवार न्यायालय में धारा 20 सब क्लॉज 3 के तहत कार्यवाही में परिवर्तित करने के लिए भेजा जाए ताकि मामलों की बहुलता से बचा जा सके। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी? केवल नाबालिग बच्चे या शारीरिक मानसिक असामान्यता वाले वयस्क बच्चे धारा 125 की सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ वयस्क अविवाहित बेटी इस प्रावधान के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। वयस्क अविवाहित बेटियों को हिंदू दत्तक और अलग भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 सब क्लॉज 3 के तहत भरण पोषण की मांग करनी होगी, जिसके लिए उचित याचिकाओं और साक्ष्यों के साथ नागरिक अदालत कार्यवाही की आवश्यकता होती है। धारा 125 सीआरपीसी त्वरित राहत के लिए संक्षिप्त कार्यवाही प्रदान करता है, जबकि धारा 20 सब क्लॉज 3 HMA में बड़े अधिकार शामिल है, जिसके लिए नागरिक अदालत निर्धारण की आवश्यकता होती है। धारा 20 सब क्लॉज 3 के तहत भरण पोषण के लिए 1956 अधिनियम की धारा 23 और 24 के तहत विशिष्ट कारकों पर विचार करना आवश्यक है, जिसमें पक्षों की स्थिति, दावेदार की उचित आवश्यकताएं और संपत्ति का मूल्य शामिल है। परिवार न्यायालय धारा 125 सीआरपीसी कार्यवाही में उचित नागरिक प्रक्रिया और अनिवार्य कारकों पर विचार किए बिना धारा 20 सब क्लॉज 3 HMA के तहत भरण पोषण प्रदान नहीं कर सकता। यदि बेटी धारा 125 कार्यवाही की लंबित अवधि के दौरान वयस्क हो जाती है तो परिवर्तन की अनुमति है। हालांकि यदि आवेदन वयस्कता प्राप्त करने के बाद दायर किया जाता है तो इसे धारा 20 सब क्लॉज 3 HMA के तहत नागरिक मुकदमे में परिवर्तित करना होगा। न्यायालय ने मामलों की बहुलता से बचने के लिए धारा 125 सीआरपीसी आवेदन को धारा 20 सब क्लॉज 3 HMA के तहत नागरिक मुकदमे में परिवर्तित करने का निर्देश दिया, जिसमें 6 महीने के भीतर त्वरित निपटान का आदेश दिया। क्या वयस्क अविवाहित बेटी धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है या उसे हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के तहत दायर करना होगा? धारा 125 सीआरपीसी के तहत आयु प्रतिबंध मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ वयस्क अविवाहित बेटी धारा 125 सब क्लॉज B सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, जो विशेष रूप से केवल नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण प्रदान करता है जो स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ है। विकलांगता तक सीमित अपवाद धारा 125 सब क्लॉज C सीआरपीसी के केवल उन वयस्क बच्चों के लिए भरण पोषण की अनुमति देता है जो शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ है। स्वयं वयस्क बेटियों को छोड़कर विधायी मंशा स्पष्ट आपराधिक प्रक्रिया संहिता जानबूझकर भरण पोषण दावों को नाबालिगों या अक्षम वयस्क बच्चों तक सीमित करती है। ये दर्शाता है कि स्वस्थ वयस्क अविवाहित बेटियां इसके सुरक्षात्मक दायरे से बाहर है। संक्षिप्त कार्यवाही की सीमा धारा 125 सीआरपीसी त्वरित राहत के लिए संक्षिप्त कार्यवाही के लिए डिजाइन की गई है और वयस्क बेटी के भरण पोषण दावों के लिए आवश्यक जटिल विचारों को समायोजित नहीं कर सकती। वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध वयस्क अविवाहित बेटियों को हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 सब क्लॉज 3 के तहत भरण पोषण दावों का पीछा करना होगा, जो विशेष रूप से उनके भरण पोषण अधिकारों को नागरिक कार्यवाहियों के माध्यम से संबोधित करता है। क्षेत्राधिकार सीमा का सम्मान परिवार न्यायालय धारा 125 सीआरपीसी के तहत संक्षिप्त आपराधिक कार्यवाही का संचालन करते समय हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के तहत नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते बिना मामले के उचित परिवर्तन के। प्रक्रियात्मक सुरक्षा बरकरार कानूनी ढांचा सुनिश्चित करता है कि वयस्क बेटियों के भरण पोषण दावों को साक्ष्य और याचिकाओं के साथ उचित नागरिक मुकदमे के माध्यम से तय किया जाए, न कि त्वरित आपराधिक भरण पोषण कार्यवाही में जो तत्काल राहत के लिए है। 3 सितंबर 2025 ज्ञानचंद गर्ग वर्सेस हरपाल सिंह एंड another. Once the complainant has signed the compromise deed accepting the amount in full and final settlement of the default sum, the proceedings under section 138 of the NIA Act cannot hold water. Therefore, the concurrent conviction rendered by the courts below has to be set aside. Justice Arvind Kumar and Sandeep Mehta. Source: Supreme Court. Why in News. Recently, Justice Arvind Kumar and Sandeep Mehta held that a conviction under section 138 of the NIA. Recently, Justices Arvind Kumar and Sandeep Mehta held that a conviction under section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881 NIA Act
cannot be sustained once the complainant signs a compromise deed acknowledging full settlement, setting aside a High Court order that had dismissed the accused application for modification. The Supreme Court held this in the case of Gyan Chand Garg versus Harpal Singh and another 2025. What was the background of Gyan Chand Garg versus Harpal Singh and another 2025? Harpal Singh filed a complaint under NIA Act against Gyan Chand Garg, alleging that the appellant had borrowed a sum of rupees 5 lakh. For repayment of the borrowed amount, the appellant issued a check Exhibit C1, which upon presentation was returned with the endorsement funds insufficient Exhibit CC2. The complainant issued a legal notice Exhibit C4 to the appellant as required under the statutory provisions. The complaint was filed before the jurisdictional magistrate under Section 138 of the NIA Act. After trial, the appellant was convicted by the Judicial Magistrate First Class JMFC in criminal case number 90 of 2009 wide order dated 21/4/2010. The appellant was sentenced to undergo simple imprisonment for 6 months and pay a fine of rupees 1000 with a default sentence of 15 days. Simple imprisonment. The additional session judge affirmed the conviction in criminal appeal number 67 of 2010 wide order dated 14/9/2010. Subsequently, the Punjab and Haryana High Court dismissed the revision petition in criminal revision petition number 2563 of 2010 wide order dated 27/3/2025. After the dismissal of the revision petition, both parties entered into a compromise settlement agreement on 6th April 2025. Under this settlement, the complainant indicated number objection to the appellant seeking acquittal. The compromise was reached in consideration of two demand drafts bearing number 004348 dated 4th April 2025 and 004303 dated 11/2/2025 for rupees 2.5 lakhs each. 3 check bearing number 354412 dated 10th May 2025, 354413 dated 10/6/2025 and 354414 dated 10/7/2025 or rupees lakh each. The appellant filed an application CRM number 15127 of 2025 seeking modification of the High Court's order dated 27th March 2025, but the High Court dismissed this application on 9th April 2025 on grounds of non-maintainability. Consequently, the appellant approached the Supreme Court through special leave petition criminal number 8050 of 2025. What were the court's observations? The Supreme Court observed that the offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act is primarily a civil wrong that has been clothed with criminal consequences to strengthen the credibility of negotiable instruments. The court noted that Section 147 of the NIA Act, inserted by the 2002 amendment, specifically makes the offence under Section 138 compoundable, allowing parties to settle disputes at any stage of proceedings. The court reiterated the characterization of Section 138 offences as civilship in criminal wolf's clothing, indicating that while the provision carries criminal sanctions, the underlying disputes are essentially of a private civil nature. The court observed that when parties voluntarily enter into compromise agreements, they do so with open eyes, understanding the risks and benefits. Such settlements subsume the original complaint and cannot be reversed by pursuing both the original and subsequent complaints. The court noted that when parties enter into agreements to compound offences and save themselves from litigation processes, courts cannot
override such compounding and impose their will against the parties' voluntary decision. The court observed that once a complainant signs a compromise deed accepting an amount in full and final settlement of the disputed sum, the proceedings under Section 138 of the NI Act cannot sustain, and concurrent convictions must be set aside. The court emphasized that the legislature through Section 147 of the NI Act has expressly permitted compounding of such offences, notwithstanding the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973, especially when parties have voluntarily arrived at a compromise. The court specifically noted that the compromise in this case was entered into without any coercion, voluntarily, and at the complainant's own will, making it legally binding and effective. What is Section 138 of NI Act about? Section 138 creates an offence when a cheque drawn by a person on his account with a banker for payment to another person is returned unpaid due to insufficient funds or exceeding to agreed overdraft limit, making the drawer liable for criminal prosecution. The drawer shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both such imprisonment and fine. The cheque must be presented to the bank within 6 months from the date it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier, failing which no offence under this section can be constituted. The payer or holder is due course must give a written notice to the drawer demanding payment within 30 days of receiving information from the bank regarding the cheque's dishonor for the offence to the established. The drawer must be given 15 days from receipt of the demand notice to make payment, and only upon failure pay within this period does the criminal liability crystallize under Section 138. The section applies only to cheques issued for discharge of legally enforceable debt or other liability, ensuring that the provision covers genuine commercial transactions and not gratuitous payments. Case laws. Messrs. Meters and Instruments Private Limited and another versus Kanchan Mehta 2018. The court held that the offence under Section 138 of the NI Act is mainly a civil wrong and has been made specifically compoundable by Section 147 of the NI Act inserted by the 2002 amendment. The object of the statute was to facilitate smooth functioning of business transactions, as dishonor of cheque causes incalculable loss to the payee and affects credibility of business transactions. P. Mohan Raj and others versus Miss Shah Brothers Ispat Private Limited 2021. The court characterized the offence under Section 138 NI Act as a civil ship in criminal wolf's clothing. Issues agitated by parties under this provision are of private nature, which are brought within the sweep of criminal jurisdiction to strengthen the credibility of negotiable instruments. Messrs. Gimpex Private Limited versus Manoj Goel 2021. When parties voluntarily enter into a compromise agreement, they cannot be allowed to reverse the effects by pursuing both the original complaint and subsequent complaint arising from non-compliance. The settlement agreement subsumes the original complaint, and complainants enter into statements with open eyes. Undertaking associated risk BV Shesha versus State of Telangana and another 2023. When parties enter into an agreement and compound the offence,
They do so to save themselves from the process of litigation. Courts cannot override such compounding and impose their will against the parties. Voluntary decision when the law allows such compounding. Maintenance pendent light during stay of proceedings. 3 September 2025. Ankit Suman versus State of UP and another. The court emphasized that mere staying of proceedings does not amount to termination of proceedings, and the liability to pay maintenance continues unless the order is set aside, varied or modified. Justice Manish Kumar Nigam. Source: Allahabad High Court. Why in news? The bench of Justice Manish Kumar Nigam in the case of Ankit Suman vs State of UP and another 2025 dismissed a petition challenging a recovery warrant for maintenance pendent light, holding that stay of matrimonial proceedings due to a transfer petition does not absolve the husband of his liability to pay maintenance under Section 24 of the Hindu Marriage Act 1955 HMA. What was the background of Ankit Suman versus State of UP and another 2025 case? The husband petitioner filed a divorce petition on 20 July 2018 under Section 13 of the Hindu Marriage Act 1955 against his wife in the family court Pilibhit. The wife filed a written statement denying the allegations and subsequently filed an application under Section 24 of the Hindu Marriage Act for maintenance pendent light on 26 March 2019. The family court initially dismissed the wife's maintenance application on 30th October 2020, but this order was set aside by the Allahabad High Court on 18th November 2021. The High Court awarded Rs 10,000 per month to the wife and Rs 10,000 to the minor daughter, along with Rs 30,000 as litigation costs. The husband challenged this order before the Supreme Court, which modified the maintenance amount to Rs 10,000 for the wife and Rs 5,000 for the minor daughter. On 29th November 2022, the wife filed an execution case for recovery of maintenance arrears, claiming Rs 2,50,000 till 26th August 2024. Meanwhile, the wife had filed a transfer petition to move the divorce case from Pilibhit to Bareilly, and the High Court stayed the divorce proceedings on 18 September 2023. The husband contended that since the proceedings were stayed, he was not liable to pay maintenance for the period of stay. What were the court's observations? The court analyzed Section 24 of the Hindu Marriage Act 1955, which provides for maintenance pendent light and expenses of proceedings during matrimonial proceedings. Justice Nigam emphasized that the object of Section 24 is to provide immediate relief to financially weak parties in matrimonial proceedings to prevent them from becoming unprovided for during litigation. The court distinguished between quashing and staying of proceedings, citing Sri Chambundi Mopents Limited versus Church of South India Trust Association 1992, holding that staying an order does not wipe it out from existence but only suspends its operation. The court noted that the Supreme Court's order dated 29th November 2022 for maintenance payment remained valid and had neither been recalled nor set aside. The judgment established that transfer proceedings themselves constitute proceedings under the Hindu Marriage Act. The court referenced multiple precedents showing that Section 24 applications are maintainable even during restoration application, revision proceedings and other ancillary proceedings. The court rejected the husband's contention as wholly misconceived and held that mere stay of proceedings does not amount to termination, thus not absolving maintenance liability. What is Section 24 of the Hindu Marriage Act 1955 about? Section 24 of HMA provides for maintenance pendent
light and expenses of proceedings. Maintenance is both a human and legal right. The section ensures temporary maintenance to spouses during pending litigation. Meaning of maintenance: financial support provided by fathers to children or husbands to wives for expenses and necessities of dependents, also known as alimony. It covers payments for living expenses. Maintenance is granted regardless of whether parties live together or divorce has been granted under Hindu laws. Meaning of pendent light: pendent light means pending the litigation or during the pendency of the case. It governs interim maintenance for livelihood support and necessary expenses during proceedings under HMA when there is insufficient or no independent income. Meaning of maintenance: pendent light, providing living expenses and financial support to wife and children while the suit is pending between parties. The provision offers gender neutral rights, allowing both husbands and wives to apply for this remedy. Provisions of Section 24 of the HMA: when any spouse lacks independent income sufficient for litigation proceedings, courts may order respondents to pay petitioners' proceeding expenses and maintenance considering respondents' income. Applications must be disposed of within 60 days from notice service date. Fundamentals of Section 24 of HMA. Hindu Marriage Act HMA. Expenses of proceedings: covers expenses during pending Hindu Marriage Act proceedings including lawyer fees, court fees, stamp duties, travelling expenses and related expenditures. Ensures financially weaker spouses can participate effectively in legal processes without cost burden. Discretion of the court: courts have discretionary power to grant maintenance, pendent light and expenses. This allows consideration of individual case circumstances for fair determination of maintenance amounts. Courts assess income sufficiency, assets and needs of both parties. Temporary nature: maintenance under Section 24 is temporary, providing financial support only during pending legal proceedings. Courts have discretion to decide final maintenance when concluding cases. Difference between Section 24 of Hindu Marriage Act and Section 125 of CRPC 144 of BNSS. Section 24 of HMA. Section 125 CRPC 144 of BNSS. Applicable only to Hindus. Applicable to all citizens regardless of religion, caste, beliefs. Maintenance during divorce, petition pendency only. Maintenance during and post divorce. Only spouses entitled. Spouses, children, legitimate, illegitimate. Parents eligible. Awards based on living standards, income, needs. Awards based on claimant needs and respondent's ability to pay. Unmarried daughter can't claim maintenance. 3 September 2025. Anurag Pandey vs. State of Uttar Pradesh through Additional Principal Secretary Home, Lucknow. And another: if a daughter becomes major during the pendency of the application under 125 CRPC, maintenance can be allowed to her in the same proceedings by the family court by invoking the provisions of Section 20 Subclause 3 of the 1956 Act. Justice Rajneesh Kumar. Source: Supreme Court. Why in News. Recently, Justice Rajneesh Kumar held that a mentally and physically fit major unmarried daughter cannot claim maintenance under Section 125 Code of Criminal Procedure 1973 CRPC and must instead file under Section 20 Subclause 3 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. The ruling came while setting aside a family court order directing maintenance to a major daughter under Section 125 CRPC. The Supreme Court held this in the matter of Anurag Pandey vs. State of UP through Additional Principal Secretary Home, Lucknow,
and another 2025 Anurag Pandey versus State of UP through Additional Principal Secretary Home Lucknow and another. If a daughter becomes major during the pendency of the application under section 125 CRPC, maintenance can be allowed to her in the same proceedings by the family court by invoking the provisions of section 20 subclause 3 of the 1956 Act. Justice Rajneesh Kumar, source Supreme Court. Why in news? Recently, Justice Rajneesh Kumar held that a mentally and physically fit major unmarried daughter cannot claim maintenance under section 125 Code of Criminal Procedure 1973 CRPC and must instead file under section 20 subclause 3 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. The ruling came while setting aside a family court order directing maintenance to a major daughter under section 125 CRPC. The Supreme Court held this in the matter of Anurag Pandey versus State of Uttar Pradesh through Additional Principal Secretary Home Lucknow and another 2025. What was the background of Anurag Pandey versus State of UP through Additional Principal Secretary Home Lucknow and another 2025? Kumari Neha Pandey, an unmarried major daughter, filed an application under section 125 of the Criminal Procedure Code CRPC seeking maintenance from her father Anurag Pandey. At the time of filing the application, the daughter held already attained majority age, which was disclosed in the application itself. The family court, despite noting that she was a major at the time of filing, directed the father to pay maintenance of 2,10,000 per month. Relying on section 20 subclause 3 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, the father challenged this order through a criminal revision, arguing that the trial court had misinterpreted the Supreme Court's decision in Abhirasha versus Prakash 2020. The father contended that the major daughter is not entitled to maintenance under section 125 CRPC and such relief can only be obtained by filing a civil suit under section 20 subclause 3 of the 1956 Act. The counsel for the daughter fairly considered that the legal position argued by the father was correct and suggested that the matter he remitted to the family court for conversion into proceedings under section 20 subclause 3 to avoid multiplicity of cases. What were the court's observations? Only minor children or major children with physical mental abnormality can claim maintenance under section 125 CRPC. A mentally and physically fit major unmarried daughter cannot claim maintenance under this provision. Major unmarried daughters must seek maintenance under section 20 subclause 3 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, which requires civil court proceedings with proper pleadings and evidence. Section 125 CRPC provides immediate relief through summary proceedings, while section 20 subclause 3 HAMA involves larger rights requiring civil court determination. Maintenance under section 20 subclause 3 requires consideration of specific factors under section 23 and 24 of the 1956 Act, including party status, claimant's reasonable wants, and property value. The family court cannot award maintenance under section 20 subclause 3 HAMA in section 125 CRPC proceedings without following proper civil procedure and considering mandatory factors. HAMA, Hindu Adoption and Maintenance Act. If daughter becomes major during pendency of section 125 proceedings, conversion is permissible. However, if application is filed after attaining majority, it must be converted to civil suit under section 20 subclause 3 Hindu Adoption and Maintenance Act. The court directed conversion of the section 125 CRPC application into a civil suit under section 20 subclause 3 Hindu Adoption and Maintenance Act to avoid multiplicity of cases with expeditious disposal within 6 months.
Can a major unmarried daughter claim maintenance under Section 125 CRPC, or must she file under the Hindu Adoptions and Maintenance Act? Age restriction under Section 125 CRPC. A major unmarried daughter who is mentally and physically fit cannot claim maintenance under Section 125 subclause 1 subclause B CRPC, which specifically provides maintenance only for major children unable to maintain themselves. Exception limited to disability. Section 125(1) subclause C CRPC permits maintenance for major children only if they suffer from physical or mental abnormality or injury making them unable to maintain themselves, excluding healthy major daughters. Legislative intent clear. The Criminal Procedure Code deliberately restricts maintenance claims to major or disabled major children, indicating that healthy major unmarried daughters fall outside its protective scope. Summary proceedings limitation. Section 125 CRPC is designed for immediate relief through summary proceedings and cannot accommodate the complex considerations required for major daughters maintenance claims. Alternative legal remedy available. Major unmarried daughters must pursue maintenance claims under Section 20 subclause 3 of Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, which specifically addresses their maintenance rights through civil proceedings. Jurisdictional boundary respected. Family courts cannot exercise civil jurisdiction under Hindu Adoptions and Maintenance Act while conducting summary criminal proceedings under Section 125 CRPC without proper conversion of the case. Procedural safeguard maintained. The legal framework ensures that major daughters' maintenance claims undergo proper civil trial with evidence and pleadings rather than being decided in expedited criminal maintenance proceedings meant for immediate relief.